Do you know what makes your video more interesting rather than music? Well, the sound effects. That random sounds makes your video more engaging and interesting than a normal video. अच्छा विजुअल्स तुम्हें अट्रैक्ट करता है उस वीडियो को देखने के लिए, पर अच्छा साउंड डिजाइन तुम्हें हुक करता है उस वीडियो को पूरा देखने के लिए. You got the point. Well, in this video I'm gonna show you 3 different sound effects that you should use in your videos to make it better than before. अब देखो, व्यूअर्स को देखना पसंद है और तुम्हें दिखाना. I mean creativity in your videos. हाँ वही, चाहे तुम कितना भी क्रिएटिव वीडियोस बना लो, पर उस वीडियो को रियल राइट देने के लिए you need the sound effects. For example, तुम इन 2 वीडियोस को देख सकते हो. So I hope you got the point. Well, किसी भी सीन को एक पावरफुल इम्पैक्ट देने के लिए तुम यूज कर सकते हो हिट्स which is sounds like. अच्छा, तो इस प्रोसेस को थोड़ा सा easiest way में सीखने के लिए I will use this video as a reference. So the video is starting suddenly. तो उस सडन मूवमेंट को इम्पैक्ट डालने के लिए हम यूज कर सकते हैं एक सिंपल सा हिट. For this scene ये हिट परफेक्ट था, but for different scene a large hit, a small hit तुम अपने सीन के हिसाब से डाल सकते हो. By the way, if you watch this video till the end, I will give you my SFX packs just for free, where you can find 50 plus sound effects and many more. So what's till the end? तो दूसरा वाला साउंड इफेक्ट आता है whoosh, जिसे तुम कुछ इस तरह के सीन्स के लिए यूज कर सकते हो. Where the movement is too fast or a shaky transition. Just a quick reminder, whooshes को तुम 3 different parts में यूज कर सकते हो. A low whoosh, a high whoosh, a deep whoosh, which are like. So let's move on to the last one, which is a riser. तो basically riser यूज होता है किसी भी सीन का सस्पेंस या फिर इंटेंस मूवमेंट दिखाने के लिए, which is something like. Well, these are some sound effects that you can use in your videos to get a better result. तो इस वीडियो में जितने भी साउंड इफेक्ट्स है और 50 प्लस साउंड इफेक्ट्स को फ्री में ले सकते हो. For a link in the description. So check it out. So make it, create it and upload it. जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, just do experiments whatever you have. In case तुम मेरे से भी better videos बना सकते हो. Because your creativity represents your knowledge, not others. Well, चैनल पे नए हो तो do subscribe for upcoming content. और तब तक के लिए bye.